Now, quickly going to the first session, a very, very important session on the yoga, basically, which is basically dealing with the precautions that we should take during our COVID times. And I'm very happy to have with us Ms. Kirti Chodia, who is a faculty at Art of Living. I would request now Dhyana Chandrani to give an introduction to ma'am, and then we can quickly start the session. Thank you, sir. I hope I'm audible. Yes, you are audible. Okay. So, a very good morning to everyone present here in this yoga session. I'm honored today to give the intro for such eminent faculty who will guide us through. There is a very famous saying in Sanskrit that Vyayamat lavate swasthyam, dirghayushyam balam sukham, arogyam param bhagyam, swasthyam sarvatha sadhanam, which means with the help of yoga, a person is able to live long and healthy life. And health is good because if health is good, happiness will always follow. Because good health is the greatest blessing one can ever have. Today, in this special session named Urja, that is a COVID special workshop to increase immunity and protection, we have with us Ms. Kirti Choria, an Art of Living faculty for meditation, breathe, and yoga. She is also a certified yoga professional with Ministry of Ayush and yoga certificate. Not only this, but also she is an ex-cultural attaché to Belarus, which is a country in Europe. We welcome you, ma'am, to this extraordinary session, and we are privileged to have you here with us and to learn amazing things from you through this session. Over to you, ma'am. Namaste. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, we can hear you. Yeah. So, like Harit Dhariwalji, he said, he called me and he said, could you take a session? And I was really happy and glad to take this session because in these times where COVID is everywhere, it is very important, and it is also, the researchers have also shown that yoga can actually boost immunity, and it actually boosts immunity. तो ये जो समय है कोविड का अप्रत्याशित समय जो ये इसमें जब हरित धारीवाल जी का मेरे पास फोन आया कि आप लेंगे क्या, वैसे हरित मेरे कजन लगते हैं, तो आई वाज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश थी कि हाँ ये सेशन मैं जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि योगा से रोग प्रतिरोधक शक्ति बिल्कुल बढ़ती है, और इसको नियमित अभ्यास से अभी रिसर्चेस ये शो कर रहे हैं कि प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड वर्किंग ऑन द इम्यूनिटी सिस्टम, जो श्वास की प्रणाली है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति पे काम करने से बहुत सहायता मिल रही है इस समय पे। तो आज का जो हम सीक्वेंस रखेंगे वो इसी को ध्यान में रख के किया है, दो इट इज अ जनरल सीक्वेंस ऑल्सो, हाँ, बट मेनी ऑफ द चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेज, many to infuse energy in the spine, many to help breathe properly. So doing keeping all this and all these in mind, let's start with the session. Let's sit comfortably wherever we are. अगर हम जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं. We can sit on a chair also, keeping our feet firmly on the ground and spine straight. So if you're not able to sit on the ground, it's okay to sit on a chair. Wherever you sit and whatever posture you sit with your spine straight. So we'll start with breathing now. So if you have noticed, small children, when they breathe, they in a cradle, if you notice them, एक पलने में अगर आपने बच्चों को देखा होगा, तो वो जब सांस लेते हैं वो पूरी सांस लेते हैं, आप देख सकते हैं वो सांस लेते हैं और छोड़ रहे हैं. तो हम सांस लेते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं. लेट्स ब्रीथ इन and breathe out. One more time, breathe in, and then this time observe where your breath is going. इस बार ध्यान दें आपकी सांस किस जगह जा रही है. क्या हो रहा है, पेट फूल रहा है या पेट पीछे हो रहा है? Is your stomach expanding or is it deflating? So usually when we do correct breathing, our stomach expands. Now we don't breathe in the stomach, but what happens is there is
in the right side of our lungs, there are 3 lobes, and the abdominal lobe is very close to the stomach. And the third lobe, there are only 2 lobes on the left side, and the heart is here. So when we breathe in properly, there's a diaphragm here. There's a muscle here which gets pushed when air gets filled in the third part of the lung and the stomach expands. So what we can do is we can expand our stomach so that diaphragm gets more space to come down, and we can breathe in more in the abdominal part of the lung. So this time when we breathe in, we'll keep focus on our expanding stomach and pushing the navel back when we breathe out. सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए नाभि को पीछे धकेलेंगे. उससे क्या होगा, जैसे ही पेट आगे आएगा, डायफ्राम मसल नीचे जाएगी और हम लंग के तीसरे भाग में, जो कि एब्डोमिनल पार्ट है, उसमें पूरी तरह से सांस भर पाएंगे, so that we can use full capacity of our lungs. So when you see small babies also, their stomachs, they expand when they breathe and they deflate when they breathe out. Let's do it together. Breathe in. Expand your stomach fully. पूरी तरह से पेट को फुलाएं. And now start expanding your chest region, the middle part of the lung, the thoracic part. पूरी तरह से छाती को फुलाएं, बीच में सांस भरें. In the sides of the chest, छाती के साइड में भरें. Keep breathing in slowly. And now lift your collarbone. आपकी 2 हड्डियां हैं यहाँ ऊपर, उनको ऊपर खींचें और थोड़ी सी और सांस भरें. A tiny more breathing in. And let go of the breath. सांस को अपने आप जाने दें. Observe the relaxation in the shoulders. Observe the contraction of the chest region and let the navel go back. This is full yogic breathing where we do abdominal, thoracic, and clavicular breathing. So keeping our mind on our abdomen first, the stomach expanding, then the chest expanding, and then lifting the collarbone up and breathing a tiny bit more, holding our breath and breathing out. Let the breath go out on its own. अपने आप सांस को निकलने दें. पहले पेट को फूलने दें. पेट फुलाएंगे तो abdominal lung में सांस जाएगी. फिर छाती को पूरा फूलने दें. thoracic cavity पूरी तरह से फूलेगी और फिर clavicular lung के लिए थोड़ा सा collarbone को ऊपर उठा के सांस लेंगे और छोड़ेंगे. Let's do this for 2-3 rounds together. Take a long deep breath in and start expanding your stomach. सांस लेते हुए पेट को फुलाना शुरू करें. जैसे जैसे पेट फूलेगा, as your stomach is expanding, as you breathe in, your abdominal lung gets more space to fill air. आपके abdominal lung को ज़्यादा जगह मिल रही है सांस भरने के लिए. Now start breathing in your chest region. अपनी छाती के मध्य में सांस भरना शुरू करें. Let the chest expand fully. Now let the air get filled in the sides of the chest. छाती के साइड में भरने दें. And now lift your collarbone and breathe in a tiny bit more. अपने collarbone को उठा के थोड़ा सा और सांस भरें. Hold your breath. सांस को रोकें. And let go of the breath on its own. अपने आप सांस को निकलने दें. Observe the relaxation coming in. The shoulders getting relaxed. धीरे धीरे कंधे ढीले पड़ रहे हैं. छाती सिकुड़ रही है. The chest is contracting. And let the navel go back. नाभि को पीछे जाने दें. One last time. Breathe in. You may close your eyes. आंखें बंद करके 100% be with your breath. Let the stomach expand like a balloon. एक गुब्बारे की तरह पेट को फूलने दें. Observe the space being created in the abdominal lung, the third part of the lung. Lungs के निचले भाग में जो जगह बन रही है उसकी ओर ध्यान ले जाएं. Now start breathing in your chest region. अपने छाती में सांस भरना शुरू करें.
लिफ्ट द कॉलर बोन अप, हल्का सा कॉलर बोन को उठाएं. होल्ड योर ब्रेथ टिल यू कैन, जब तक सांस रोक सकते हैं रोकें. एंड देन लेट इट गो आउट ऑन इट्स ओन, अपने आप सांस को निकलने दें. Relax and observe the state of mind. Yoga also helps to calm down the mind. And our breath is the connect between the mind and the body. Slowly open your eyes. So, whenever you are aware, जब भी आप थोड़े जागरूक होते हैं about your breath, अपनी सांस के बारे में, तो you must practice this full yogic breathing. It can be just done anywhere, on your desk, when you're sitting and doing your work, और you're just relaxing. आप आराम से काम कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं, आप अपनी सांस को ध्यान दे के लेंगे, immediately your energy will go up. आपकी ऊर्जा एकदम से बढ़ जाएगी. अब हम इस सेशन में जो करेंगे, there will be 3 rules to it. So one will do everything listening to our own body. जो कुछ भी करेंगे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार. So if I am able to bend till here, it is also good. But somebody is able to bend till here only and be here, that is also good. And somebody is not able to bend just little bit, that is also good. So whatever you can do, give your 100% and be there. Second is, we'll keep breathing whenever we stop in a posture. जब भी कोई जगह पे हम रुकेंगे तो उस जगह हम सांस लेना छोड़ना चालू रखेंगे, जिस भी posture में रुकेंगे. पहला ये था कि अपने शरीर को की क्षमता को देखते हुए करेंगे. दूसरा, जहां पे भी रुकेंगे सांस लेना छोड़ना चालू करेंगे. तीसरा, जो भी करेंगे पूरा 100% खुश मन से करेंगे. We'll do everything 100% listening to ourselves, but with a smile and a happy state of mind. Now, happy state of mind will immediately help you to go more deeper in the postures. आपको postures में जाने में आराम मिलेगा. Whatever we doing here is not for people who are in isolation, who have COVID. Everything is not for them. They can do breathing, no doubt. And post recovery also, there are a few things that are to be taken care of. So you have to be just careful. So now we'll do Kapalbhati Kriya or Pranayam. So Kapalbhati means, Kapal means the skill, Bhati means the shine. कपाल यानी कि जो हमारी खोपड़ी और भाती जो है वो चमक है. कपाल भाती brings instant shine. It increases the blood circulation to the brain and it brings shine to our forehead. That is why it's called kapal bhati. So it increases the blood circulation. जो रक्त संचार है उसको बढ़ाता है. In kapal bhati, our breathing in is passive and breathing out is active. सांस जब हम लेते हैं तो वो अपने आप आती है, लेकिन सांस छोड़ते हुए हमारा पूरा ध्यान होता है सांस छोड़ने में. जोर से नाक से सांस को छोड़ते हैं. We breathe out with force through the nose and push the navel back. Our attention is also on the stomach and the nose. So we push, when we breathe out, we push the stomach back and we breathe out through the nose with force. So I'll just show you once how we do it. It's active breathing out and passive breathing out. Let's take a long deep breath in, just see once and then we'll do it together. Let the stomach expand fully and then forcefully breathe out through your nose, pushing the navel back. Breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. So this is how we'll do it. So let's all do it together. एक साथ करेंगे कपालभाति. नाक से सांस छोड़ेंगे जोर से और नाभि को पीछे की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ पुश करेंगे. Sit straight, sit in a comfortable posture with your spine straight and a smile on your face. Your palms on your knees, downward facing. हथेलियां नीचे हैं घुटने पे and sit straight. Take a long deep breath in. As you breathe out, relax the shoulders. एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते छोड़ते कंधों को ढीला छोड़ें. For Kapalbhati, breathe in and let the navel come out fully. Expand your stomach as you breathe in. पूरी तरह से पेट को बाहर निकलने दें. And start.
Breathe in and out, 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 in, out, in, out. Let the stomach come out fully and out, in, out, in, out. पेट को पूरी तरह बाहर आने दे और फिर ये पीछे की तरफ धकेलें. In, out, 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 and relax. विश्राम करें. Close your eyes. Feel the energy in the head region. The blood supply towards the head instantly increases. Feel the stimulation in the stomach region. पेट में जो भी ताकत मिल रही है उसकी ओर ध्यान ले जाएं और मस्तिष्क की तरफ ध्यान ले जाएं. Let's get ready for the second round of Kapalbhati. Kapalbhati के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे. Take a long deep breath in. As you breathe out, relax the shoulders. Keep your chin parallel to the floor. ठुड्डी को जमीन से जब समानांतर रखें. For Kapalbhati, breathe in and let the stomach expand fully. And let's start. Out. Breathe in, out, 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 and relax. Close your eyes. This time also observe your breath. इस बार अपने सांस पे भी ध्यान दें. Your breath has become subtle, long and deep. आपकी सांस लंबी और आरामदायक हो गई है. Observe the sensations in the head region. मस्तिष्क में जो ऊर्जा महसूस हो रही है उसकी ओर ध्यान ले जाएं. And you may slowly open your eyes. धीरे से आंखें खोल लें. So our immunity points are in all the joints. So the neck joint, the shoulders, the armpits, the groin area, and also in the chest and the stomach region. So we'll do some Sukshma Vyayams to enhance the immunity points. Immunity points जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसके जो points हैं वो हमारे सारे joints में होते हैं. तो कुछ joint rotations करेंगे ताकि हमारी immunity को बढ़ने में सहायता मिले. So take a long deep breath in and breathe in. Take your head back. सांस लेते हुए गर्दन को पीछे लाएंगे. सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से लगाएंगे. The chin to the chest as you breathe out. Breathe in. Go back. Breathe out. Bring your chin to the chest. सांस लेते हुए गर्दन को पीछे and stay here. Feel the stretch in the front and contraction at the back. आगे जो खिंचाव है, पीछे जो संकुचन है उसकी ओर ध्यान ले जाएं. Breathe out. Take the chin to the chest and feel the stretch at the back and contraction in the front. आगे जो संकुचन है, पीछे जो खिंचाव है उसकी ओर ध्यान ले जाएं. Breathe in. Come to the center. One more time. Breathe in. Go back. Breathe out. Take to the chin to the chest. धीरे से ठुड्डी को छाती से लगाएं. यहीं पे रुकें. Stay here. And now we'll make circles with our neck. So breathe in. Slowly rotate your neck to the right shoulder. Take your right ear to the right shoulder as you're breathing in. Go back. Breathe out. Take your left ear to the left shoulder. And come back in the front. सांस लेते हुए दाहिने से गर्दन को धीरे धीरे पीछे घुमाएंगे. पीछे ले जाएंगे.
सांस छोड़ते हुए बाएं से गर्दन को घुमाते हुए आगे आएंगे. Just be with the movement of the neck and the breath. Breathe in and out, in and out. Now opposite side. Breathe in from the left side and breathe out from the right side. Slow, gentle movements coordinating the breath and the movement. Breathe in and out. One last round, in and out. Relax. Lift the chin up as you breathe in. सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे. Let's all stand up in our places. अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे. And let's start walking. Let's start walking. Let's bring some energy. कुछ ऊर्जा लेके आते हैं शरीर में. Lift your knees up. धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाएं. And let's start jogging. Slow jogging on the spot. Now lift your knees up and hit with your palms. Hit your hips with your heels. अपने एड़ियों से hips को hit करें. Take the legs to the sides. And slowly jog again. धीरे धीरे थोड़ी सी jogging वापस. And relax. Observe your breath right now. अभी सांस पे ध्यान ले जाएं. Let the breath settle down. सांस को शांत होने दें. Now, as you breathe in, take both your hands up from the sides. Open your fingers fully. सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर लाएंगे. उंगलियां पूरी तरह खुली है. As you breathe out, relax the spine. One more time. Breathe in and start pulling your hands upwards. हाथों को पूरी तरह से ऊपर खींचें. उंगलियां, कलाई, कोहनी, shoulders, sides. Feet are firmly placed on the mat. उंगलियों को, कोहनी को, कलाई को, sides को ऊपर उठाएं. Wrist, elbows, shoulders. Interlace the fingers. दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएं. Turn them up. ऊपर की तरफ करें. Your feet are exactly below your hips. आपके पैर के पंजे नितंब के एकदम नीचे हैं. Breathe in. Come up on your toes. धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैरों के बल आएंगे. सांस छोड़ते हुए नीचे. सांस भरते हुए पैरों के ऊपर, पंजों के ऊपर. सांस छोड़ते हुए एड़ियां नीचे. Come up on your toes as you breathe in. As you breathe out, bring the heels down. One more time, and this time look at one place in front of you and hold the pose. And keep breathing here. In and out. यहीं पे सांस लेना छोड़ना चालू रखेंगे और रुकेंगे. Breathe out. Come down. Bring the heels down. एड़ियों को नीचे लाएं. Stay here. Stay here. And now as you breathe in, stretch up. As you breathe out, bend to your right side. धीरे से अपनी दाहिनी तरफ झुकेंगे जितना झुक सकते हैं. Remember the first rule? Do everything listening to your own capacity. Come back to the center as you breathe in. सांस लेते हुए बीच में. As you breathe out to the left side. Push the hips to the right side. Keep breathing and keep holding. Come back up and now look up. नजर ऊपर, हाथ ऊपर. और अब दोनों हाथों को खुला कर लें और धीरे धीरे नीचे आएंगे. One more time. एक बार और. Sit with your feet hip width apart. Stand with your feet hip width apart. आपके पैर के पंजे आपके नितंब के बराबर खुले हैं. Your fingers on this, your hands on the sides. आपकी हथेलियां sides में. Fingers are open. उंगलियां पूरी तरह से खुली है.
Push the navel a little back, push the shoulders back, chest out. थोड़ा सा पेट को पीछे पुश करें, कंधे पीछे, छाती आगे की तरफ. Breathe in, take your hands from the sides. धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे. And now look up and stretch your chest up and the hands up. अपने हाथों को और छाती को ऊपर खींचें. आपके पैर के पंजे जमीन से लगे हुए हैं. Your soles of the feet are firmly placed on the mat. Now bend back from the shoulders. If you have BP, vertigo, you don't go back, just look up, or heart issues also. Others can bend from the shoulders and the chest. As you breathe out, push the hips back. Come at 90 degrees. Your torso is parallel to the floor. सांस छोड़ते हुए हिप्स से झुकते झुकते 90 डिग्री पे आएंगे. जमीन से समानांतर आपकी शरीर का ऊपर का भाग. Now, as you breathe in, keep going down. As you breathe out, push the hips up. As you breathe in, bring the head down. As you breathe out, push the hips up and chest closer to the legs. Wherever you can place your hands, on the mat, on your ankles or your calf muscles. Wherever you can hold it there. जहां पे भी रुक सकते हैं, चाहे पिंडलियां पकड़ सकते हैं या पंजे या फिर जमीन पे हाथ लगा सकते हैं. And keep breathing here. Slowly breathe in. Come back to the center. Bring the biceps close to the ears. Come back up and breathe out. Hasta Padasana. It helps to open the chest. Take a long deep breath in and breathe out. एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें. Now bring the hands in front of you. दोनों हाथ आपके सामने कंधे की सीध में parallel to each other. The hands are in line with the shoulders, parallel to each other. Feet are just below the hips. As you breathe in, start turning to your right side. धीरे धीरे अपनी दाहिनी तरफ घूमना शुरू करें. From the stomach, from the chest, from the shoulders. पहले पेट से घूमें, फिर छाती से, फिर कंधों से. Now, if your right foot is lifting up, press it down. दाहिना पांव अगर लिफ्ट हो रहा है तो उसको नीचे प्रेस करें. And look over your right shoulder. दाहिने कंधे से पीछे देखें. Don't fall back. पीछे की तरफ झुके नहीं. As you breathe in, lift the spine up. As you breathe out, see if you can turn or twist a little more. सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाएंगे. सांस छोड़ते हुए देखें कि आप थोड़ा सा और पीछे घूम सकते हैं क्या. Keep smiling. Slowly come back to the center. As you breathe in, सांस लेते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ घूमना शुरू करें. As you breathe out, turn to the left side. And now, twist a little more from the stomach, the chest, the shoulders, and look over your left shoulder. थोड़ा और पेट से, छाती से, कंधे से घूमेंगे और पीछे देखेंगे. सांस लेते हुए वापस बीच में और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे. Relax and observe the opening in the chest region. जो आपके chest region में opening है उसकी ओर हो रही है, उसकी ओर ध्यान ले जाएं. Place your hands on your shoulders. Bring the elbows together and make a big circle with the elbows. Breathe in and out. सांस लें और छोड़ें. लें और छोड़ें. Opposite side. Breathe in from the back. Breathe out from the front. Breathe in and out. In and out. In and out. Relax. And now take your hands to your waist. As you breathe in, go back. As you breathe out, bring the hips in the front. सांस लेते हुए पीछे जाएं. सांस छोड़ते हुए नितंब को आगे पुश करें. Now start making circles with your waist. Breathe in as you go to the right side. Breathe out as you come from the left side to the front. Breathe in.
सांस लेते हुए दाहिने से पीछे, सांस छोड़ते हुए बाएं से आगे. Opposite side, anti-clockwise. Breathe in and out. In and out. In and out. And relax. Now if you can, just a minute. Okay. Now if you can spread your hands, spread your hands at your shoulder level. कंधों की सीध में हाथों को खोलें. Balance yourself by placing your weight on the left leg. अपना पूरा वजन बाएं पांव पे रख दें. And now swing your right leg in front and back. Breathe in and out. In. If you can't balance like this, you can also take support of a wall or hold the top of a chair. आप एक दीवार का सहारा भी ले सकते हैं और कुर्सी को ऊपर भी के हिस्से को पकड़ के भी कर सकते हैं. Now relax. विश्राम करें. Shift your weight to the right leg. अपना वजन दाएं पांव पे पूरा तरह से कर लें. And now we'll swing the left leg front and back. जो बायां पांव है उसको आगे पीछे करेंगे. Breathe in and out. In and out. This is for the hip joint. And out. And relax. Bring the hands down. Bring your right foot in front. बाएं पांव दाहिने पांव को आगे लाएंगे. Point the toe down. Breathe in. Flex the feet in. Breathe out. Out. Breathe in and out. In and out. And make full circles with your feet. Big circles with your toes. Opposite side. अपने पैरों के पंजों से पूरा गोलाकार बनाएं. And keep breathing in and out. The other leg. Left leg in front. Point the toes down. बायां पांव आगे. पंजे पूरी तरह से नीचे. Breathe in and out. In and out. And make full circles. And opposite side. Relax. Take a long deep breath in. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें. Make some distance between both the legs. दोनों पांव के पंजों में थोड़ी सी दूरी कर ले. करीब 2.5 से 3 फुट, 2.5 to 3 feet apart. Both the hands up. दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे. Now turn your right foot to 90 degree. Left foot. The toes are pointing 15 degrees inside. बाएं पांव दाहिने पांव को 90 डिग्री पे कर लिया. बाएं पांव के पंजे थोड़े अंदर हैं. Breathe in. As you breathe out, stretch to your right side. धीरे से अपनी दाहिनी तरफ शरीर को खींचें and look to your right side. दाहिनी तरफ देखें और फिर धीरे धीरे हाथ को घुटने के नीचे रख लें. दूसरा हाथ ऊपर और ऊपर देखें. Keep breathing here. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें. त्रिकोण आसन, the triangular pose. Slowly come back to the center as you breathe in and bring your waist to the center. Both the feet in front. दोनों पांव को सामने कर लें. बाएं पांव को 90 डिग्री पे मोड़ेंगे. साइड में मोड़ लेंगे पूरा. दाहिना पांव 15 डिग्री inside. The right foot is at 90 degrees on the side and the right foot is 15 degrees inside. Rotate your waist to the center. बीच में आए. दोनों हाथ shoulder के level पे. Both the hands are at the shoulder level. Now go to your left side. धीरे से अपनी left side जाएं. And bend and place your hand below the knee. The other hand is up and look up and breathe. Feel the opening in the right side of the chest. Slowly breathe in. Come back to the center. Breathe out. Bring the hands down and relax. Bring the feet together. Let's sit down in our place. अपनी जगह पे बैठ जाते हैं. अब हम मार्जर आसन करेंगे. We'll do the cat pose. So in the cat pose, what we do is we keep our
knees just below our hips. So knees are hip width apart. Open the hands fully, fingers open, and place the palms below your shoulders. This is tabletop position. So your palms are shoulder width apart and your knees are hip width apart. Now as you breathe in, look up, open your chest and press the spine down. Let the hips open at the back, come up. सांस लेते हुए छाती को खोलें, नजर ऊपर, चेहरा ऊपर और स्पाइन को नीचे दबाएं, नाभि को नीचे दबाएं और नितंब पीछे की तरफ ऊपर खुलने दें. Breathe out, roll your spine up. सांस छोड़ते हुए पूरी तरह स्पाइन को ऊपर रोल करें. Take your chin to the chest, ठुड्डी को छाती से लगाएं and push the hips down. Push the navel up and hips down. Roll more and more. Take your chin to the chest. को छाती से, but do listening everything to your own body. अपने शरीर को सुनते हुए करें. Breathe in, push the spine down. Breathe out, push the spine up, navel up. अगर आपने बिल्लियों को देखा हो तो अपना आलस ऐसे ही निकालती हैं. They make their spine supple before starting anything. In fact, all the animals do that. सभी जानवर अपनी स्पाइन को पहले तैयार करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं. सिर्फ हम इंसान नहीं करते हैं. Breathe in, look up, push the navel down, push it, and breathe out. Energizes the spine. रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का संचार होता है इससे. And now we'll place our hips on our heels. अपने नितंब अपने एड़ियों पे रख देंगे. थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स करके पीछे कर सकते हैं. You may relax the hands a little bit. Breathe in, straighten your spine. Breathe out, go down. Press your stomach into the thighs. पेट को जंघाओं की तरफ जाने दें. शिशु आसन, baby pose. If you see babies, they love to relax in this pose. छोटे बच्चे इस पोज में बहुत आराम करते हैं. Keep breathing and keep relaxing. सांस लेते रहें और विश्राम करते रहें. Slowly start rolling your spine and pulling your hands back. Vertebrae by vertebrae. रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे घुमाते हुए हाथों को पीछे खींचते हुए ऊपर आएंगे. Shoulders back and lift the chest up. Feel the relaxation in the spine. Now, lie down on the mat. Mat के ऊपर लेट जाएंगे. Place both the palms, fingers open below your shoulders. दोनों हथेलियां पूरी तरह से उंगलियां खुली हुई अपने कंधों के नीचे. Your chin is on the mat and both the legs together. दोनों पांव आसपास है और टुड्डी जमीन से लगी हुई है. Toes are pointing backwards. जो आपके पांव के पंजे हैं वो पीछे की तरफ खुले हुए हैं. We'll do the Bhujangasana and it is good for the spine as well as the opening of the chest. Spine के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए और छाती में खुलापन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है. Keep the elbows close to the body as much as possible. अपनी कोहनियों को शरीर के पास रखें जितना मुमकिन हो. Now as you breathe in, first lift your chin up, then your shoulders, then your chest, then your navel, and 1 inch below the navel. Bring the elbows close. अपनी ठुड्डी को, छाती को, पेट को, नाभि को ऊपर उठाएं, नाभि से 1 इंच नीचे तक. Now roll the shoulders back. Bring the shoulder blades together. दोनों कंधों को पास में लाएं, पीछे ले जाके, and look up. ऊपर देखें and smile, smiling cobras. And keep breathing. Long deep breaths in and out. लंबी गहरी सांसें लेना छोड़ना चालू रखें और मुस्कुराते भी रहें. As you breathe out, slowly bring the navel down, the chest, the shoulders and the chin. धीरे धीरे नाभि, पेट, छाती, कंधे नीचे लेके आए. We'll repeat it once more.
Breathe in. Slowly come back up. Come. Chin, shoulders, chest, stomach, navel. Roll the shoulders back. Pull the shoulder blades in and look up. Keep the palms firmly on the mat, elbows close to the body. हथेलियां जमीन पे, कोहनियां पास में. सांस लेना छोड़ना चालू रखें. Breathe out and slowly inch by inch come down. धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और अब हम मकर आसन में लेट जाएंगे. We lie down in the crocodile pose. For the crocodile pose, turn your face to right side. The right leg and the right elbow are at 90 degree. Palm in front of the face. अपने चेहरे को दाहिनी तरफ मोड़ लें. दाहिना घुटना दाहिनी कोहनी को 90 डिग्री पे कर लें. दूसरा हाथ आपके सिर के ऊपर जमीन पे है. सिर की चोटी की सीध में जमीन पे है. Relax fully here. And we'll do Bhramri pranayam here. We'll hum like a humming bee. यहाँ पे हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. मुंह बंद करके की साउंड निकालेंगे. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Vishram करें, relax. Now turn to the other side into Makarasana. Very good. The prone position for breathing. Turn the elbow and the knee of the limbs that are on top at 90 degree. The other hand above the top of the head on the floor. सिर की चोटी की सीध में दूसरा हाथ ऊपर है और जो भी पांव और हाथ ऊपर है उनको 90 डिग्री पे मोड़ लें. Breathe in. Breathe in. Relax. विश्राम करें. Slowly from your right side, roll over to your back. धीरे से दाहिनी तरफ से मुड़ते हुए अपने पीठ के बल आ जाएंगे. We'll do पवन मुक्तासन. Bend both the knees. दोनों पांव के घुटनों को मोड़ेंगे. दोनों पांव के घुटनों को छाती के पास लेके आएंगे. Bring the knees close to the chest. With the help of your hands, circle the legs. हाथों के सहारे दोनों पांव को पकड़ लें and push the thighs into the chest. अपनी जंघाओं को पेट और छाती में दबाएं. Push the shoulders down. कंधों को नीचे करें. Breathe in. सांस लें और सांस छोड़ते हुए कंधे से ऊपर उठते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे. You hold your legs firmly with your hands. As you breathe out, bring your nose in between the knees or wherever you can. If you can't lift up or if you have cervical spondylitis, don't lift up, just keep the head down. Keep breathing here. As you breathe in, take the head down. As you breathe out, straighten the legs. धीरे से पैरों को खोल लें. Spread both the hands in line with the shoulders. दोनों हाथों को कंधों की सीध में पूरा खोल लें. Bend the right knee and place the right foot on the left knee. Nataraj Asana, the dancing Shiva pose. This also helps in the health of spine and opening of lungs, both together.
Now take the left hand and place it on the right knee. दाएं पांव के पंजे को बाएं घुटने पे रख लें, घुटने को मोड़ते हुए, और बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ लें. Breathe in and press your right knee to the left side and look to your right side. Your face is opposite to your knee. आपका घुटना आपके चेहरे से एक दूसरे के विरोध में है. धीरे धीरे घुटने को नीचे दबाएं. See to it both the shoulders are on the mat. दोनों कंधे जमीन से लगने चाहिए, घुटना लगे या ना लगे. Even if the knee does not touch down, it's okay, but the shoulders should be on the mat. Keep breathing and observe the movement of breath in the spine and opening in the chest region. Slowly breathe in, come back to the center. Breathe out, straighten the leg. Breathe in, bend your left knee and place your foot on the right knee. Left foot on the right knee. Now take the right hand, place it on the left knee. Breathe in. As you breathe out, press the left knee to the right side and look to your left side. बायां पांव दाएं घुटने पे है और अब हम बाएं घुटने को दाहिनी तरफ जमीन की तरफ प्रेस कर रहे हैं और चेहरा बाईं तरफ है. Keep breathing and keep smiling. Slowly come back to the center and straighten your leg. Fully relax here. पूरी तरह से विश्राम करें. You may open your legs 1 to 1.5 distance feet apart. If you wish, अगर चाहें तो थोड़ा पैरों के पंजों में दूरी कर लें. Your palms are facing the ceiling 6 inches away from the body. आपकी हथेलियां छत की तरफ खुली हैं 6 इंच दूरी पे. Take a long deep breath in. लंबी गहरी सांस लें and breathe out. पूरी तरह से सांस को छोड़ दें. Take one more long deep breath in. As you breathe out, relax the whole body. एक और लंबी गहरी सांस लें. सांस छोड़ते हुए शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें. Now we'll take our attention to each body part one by one. Take a long deep breath in. As you breathe out, take your attention to both the feet. एक लंबी गहरी सांस लें. सांस छोड़ते हुए दोनों पांव के पंजों पे ध्यान ले जाएं. If you wish, you may gently move your fingers and toes. अगर आप चाहें तो आप हल्का सा अपने अंगूठे और पैरों की उंगलियों को हिला सकते हैं. Take your attention to your ankles and the calf muscles. दोनों पांव की पिंडलियां और एड़ियों पे ध्यान ले जाएं. Take a long deep breath in. लंबी गहरी सांस लें. As you breathe out, relax more. जैसे जैसे सांस छोड़ें और विश्राम करें. Take your attention to your knees of both the legs and the thighs. दोनों पांव के घुटने और जंघाओं पे ध्यान ले जाएं. The hips. दोनों पांव के नितंब. Take a long deep breath in. लंबी गहरी सांस लें. As you breathe out, relax both the legs fully. पूरी तरह से दोनों पांव को ढीला छोड़ दें. पैरों को ढीला छोड़ दें. The whole of both the legs. पूरे दोनों पांव. Take your attention to your lower abdomen. पेट के निचले भाग में ध्यान ले जाएं. Navel
नाभि, the whole stomach, पूरा पेट, chest region, छाती, take your attention to both the shoulders, elbows and wrists of both the hands, कंधे, कोहनियां और कलाई, whole of the hands, पूरे हाथ. Take a long deep breath in. As you breathe out, relax more and more. सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ें. Take your attention to your throat and neck region. गले में और गर्दन में ध्यान ले जाएं. The whole face, पूरा चेहरा. Relax the eyes and the eyebrows, the ears, आंखें, भुएं, forehead, कान. Back of the head, सिर का पिछला भाग. Top of the head, सिर की चोटी. The whole body, पूरा शरीर. शरीर में कहीं भी दर्द या खिंचाव महसूस हो रहा है तो उस जगह ध्यान ले जाके कुछ सांसें लें और छोड़ें. Breathe in any part that you may feel pain or tension in. Relax fully. लोका समस्त सुखिनो भवन्तु. लोका समस्त सुखिनो भवन्तु. लोका समस्त सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Take a long deep breath in, लंबी गहरी सांस लें and gently roll over to your right side. आंखें बंद रखते हुए दाहिनी तरफ करवट ले लें. With support of both your hands, keeping your eyes closed, you may gently sit down. दोनों हाथों का सहारा लेके आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे. अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे. नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए बाएं हाथ की पहली उंगली और अंगूठे को मिला लेंगे. बाकी तीनों उंगलियां साथ में सीधी हैं. We'll touch the tips of the index and the thumb finger and keep the other 3 fingers open and straight. Place the palm on the knee. palm जो अपना हाथ है उसको घुटने पे रख लेंगे. दाएं हाथ की उंगलियों को 3 भाग में मोड़ लेंगे. अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे. छोटी उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे. पहली 2 उंगलियां भ्रूमध्य में, छोटी उंगली और middle finger are together, thumb is together and first 2 fingers are together. We'll breathe in, take a long deep breath in. Close the right nostril and breathe out from the left nostril. धीरे धीरे से दाहिने से सांस, दोनों नासिका से सांस भरेंगे और बाएं से धीरे धीरे छोड़ेंगे दाहिनी को बंद करके. Breathe in through the left nostril.
बाईं नासिका से सांस भरें. Close the left nostril and breathe out from the right nostril. बाईं नासिका को बंद करें, दाहिनी से छोड़ें. Now from where we breathed out, we'll breathe in. जहां से सांस छोड़ी वहीं से breathe in करेंगे. Breathe in from the left, right, sorry. दाहिनी से सांस भरें and breathe out from the left. बाएं से छोड़ेंगे. Long, gentle breaths. लंबी और हल्की सांसें. Breathe in from the left. बाईं नासिका से सांस भरें. हल्की और लंबी सांस. बाईं को बंद करें, दाहिनी से छोड़ें. दाहिनी से सांस भरें. Breathe in from the right. Close the right nostril and breathe in from the left. Breathe out from the left. बाएं से सांस छोड़ें. Breathe in from the left. Close the left nostril with the third finger and breathe out from the right as you open the thumb. Breathe in from the right. Close the right nostril and breathe out from the left. Continue. Breathe in left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. Continue on your own for 1 or 2 more rounds. As you breathe out, relax. Your palms facing the ceiling. Hands on the knees. आपकी हथेलियां आसमान की तरफ और घुटनों पे रख दें आराम से. Let's pray for everybody for the fast recovery and healing of the world. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Take a long deep breath in. लंबी गहरी सांस लें. As you breathe out, become aware of your body and the surroundings. सांस छोड़ते हुए शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. Taking your own time, you may gently open your eyes. अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. So with this, we end this session. Of course, a lot of research has been done and a lot of breathing practices every day will help you keep your immunity high and the joint rotations. If you can't do much, at least you can do the joint rotations. They will help you keep your immunity high. And also, it's a very nice thing to learn Sudarshan Kriya if you can. It's very good at these times to calm the mind and the body and increase the immunity. Thank you so much for having me here. It was a pleasure to be here. Namaste. I hope you enjoyed the session. Am I audible, Harit bhai? Yeah. Yeah. Good morning, everyone. First, I would like to thank you, Harit bhai, for giving me an opportunity to give a vote of thanks.
We being a member and a student of institute are extremely delighted to have such a eminent personality guiding us for the fitness. Madam, your experience will be lighthouse in our dark time of the COVID. Thank you, Kirti ma'am, for such a wonderful session. It was very smooth and at very reasonable speed, very refreshing. I'm sure due to your clear instructions, all the participants must have done all the yogas very nicely. Thank you so much. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you so much for having me. I really enjoyed being here. Thank you, so Harit. much. Yeah, Yeah. thank you so much. And the Kirti, for joining. association. Yeah. Thank you so much. We all had a great time. We are getting very positive responses from everyone. Thank you so much for a wonderful session today.